Good morning to all students. Good morning and welcome. I hope I am audible. I hope I am visible. All students. Morning to all students. If you are able to listen to me, kindly confirm. Good morning. Good morning to all. Good morning and a warm welcome. Namaskar. We are here to start yet another topic. एक नया topic शुरू करेंगे. We are going to start about hydrosphere. So we have spent some time on the land, understanding the land and its rules, understanding the atmosphere and its rules, and now we are going into the hydrosphere. आज घुसेंगे hydrosphere में, ocean में. रेडी हैं सब लोग? एक बार उस एरिया में जाने के लिए we are going to go into the area which is mostly unknown. बहुत सारी चीजें हैं जो ओशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता है. So we are going to look at that. Is everyone with me on this? चलिए, so भोपाल में temperature is 32-19. Ayushi, thank you for the weather forecast. All the students who are giving me the weather forecast. अब थोड़ा सा weather forecast में अपना को बढ़ाइए. So weather reports, if you are giving us weather reports, I have a request. Weather reports में एक request है. Do not restrict just to temperature. Temperature is okay. Now I would want you to look at clouds and precipitation. Clouds and precipitation. This is important. Now you have understood something on atmosphere. Next is, I would also want you to start looking at special atmospheric phenomena. Special atmospheric phenomena. And also, another thing that comes in your weather report is AQI, Air Quality Index. अभी तक मुझे क्या मिलता है? Temperature and winds. This is what I am getting every day. This is what I am getting. I want the students to go a step beyond. Good morning to all. Good morning and welcome. So Varanasi is 34. You can see the temperatures in North India after the western disturbance and its influence is gone. The temperatures are back above 30. और इसके बाद ये बढ़ते ही जाएंगे. इसके बाद बढ़ते ही जाएंगे. We will be hoping that one western disturbance comes in North India so that it brings the temperature down. But as the month of March is coming to an end, April, May, the chance of western disturbance reduces a lot. And remember, western disturbance will not come because jet streams are straight. They will come because jet streams are wavy. इसलिए आने वाला. Otherwise the jet stream is going towards China. Remember, the sun is coming north and the jet stream is shifting. Raniganj, West Bengal, 34-22. Thank you. Suvadeep Kundu. Precipitation is 0. And I said, you know, एक नई चीज डालेंगे अपने weather reports में. Please have a look at this and also look outside. Look outside your window and see what are things going over there. Is everyone okay? I can see Manpreet Kaur Joshi, precipitation in Punjab, Sangrur. Okay, I get that. 9.9 mm, very good, because you know, as western disturbances are impacting, they impact the union territory of Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana. These are the states. So I can see precipitation coming from Punjab. Very valid, Manpreet. Thank you. Gaya Bihar is 33-16. Anshu, we write maximum and then minimum. पहले minimum नहीं लिखते हैं, maximum, minimum. And the difference between maximum and minimum is called the daily range. Range. और range में always remember that the range is higher in continents than compared to coastal areas. Range will be very, very high in deserts. The deserts in the day become very, very hot. At night, they become very, very cold because of absence of moisture. No moderating effect. Whereas on the coastal areas, the days are not very, very hot and the nights are not very, very cold. So range is one idea. आपको range भर से पता चल सकता है. If you look at the range, you will very easily find out that where this area is located.
And do you know which belt, which latitudinal belt is known for minimum range? जल्दी से बताइए, minimum range of daily range of temperature कहाँ होगा minimum? Northwest Delhi. Precipitation, I get that. Haridwar 2717. Okay, Akanksha, thank you. Abhijit Saha from Kolkata 3832. I get that. Jharkhand Hazaribagh 2917. I can see that. Thank you for mentioning the pressure also. Everyone, I have got this. एक नई report I have from Goa. We are getting a report from Goa. Goa says 2924. Clouds are cumulus and cirrostratus. Very good, Suryakant Sahu. So Suryakant has been looking at the clouds, and I want to tell you, when you are in Goa, the coastal area, there will be a lot of dynamics happening in the clouds. So that's amazing. Winds are I don't know what you have written, 04005 knots. So some error may be here. So thank you, Suryakant, for contributing. Muzaffarpur, Bihar is 3329. I am not writing it on the screen, but as I said, these are the new parameters. So not tomorrow, we are going to have the next class on Monday now. So I would want you to keep an eye on that. Scattered thunderstorms in Punjab. I get that, Manpreet. Thank you. किसी ने कहा पोल पर, पोल. So I would want to say equatorial region. Equatorial region is the region where we have the minimum, temperature fluctuations. Equatorial region. Rose is saying coastal region. You are absolutely correct, but coastal region can be at different latitude. My question was which latitudes? Which latitudes have minimum temperature range? That is equator. Do we get that? बहुत अच्छी बात है. Such questions are coming in prelims, so इसलिए भी हम वो कर रहे हैं. बिल्कुल सही है निशांत कुमार. Thank you. Everyone, so 5 minutes are over. We have looked at the weather. Now we are going to enter an area, and this area is called the hydrosphere or the oceans. Is everyone with me? Hydrosphere or the oceans. So the challenge with oceans, hydrosphere पे आएंगे. उससे पहले, before I come to hydrosphere, hydrosphere is not equal to ocean. Hydrosphere is the water sphere. Water sphere, yes or no, is not equal to oceans. But in our syllabus, we will be focusing more on oceans. So today's class will also tell you other things about oceans. Yes or no? Everyone, is the audio video fine? Audio video, my system is showing that the audio video is fine. Thank you. I'm not taking any more weather reports. Yes, is everyone with me? So my question to you all is, before I get into this, why is hydrosphere important? And second question is significance of ocean. Why is hydrosphere important? And second is significance of oceans. Quickly. Ocean absorbs carbon dioxide, maintains atmosphere. In PYQ, there are so many questions about climatic conditions. Means which climate is this? Yes, Priyanka. Yes, Priyanka, that is there. बहुत अच्छी बात है. Amazing. So oceans are the biggest storehouse of water.
storehouse of water. Nearly 71% of the planet's water is there. Hydrosphere is important because water makes life possible. So livability, yes, it is because of water that life originated. Life originated in water. Life originated in water. I also want to tell you all the atmospheric drama which we saw, winds, cyclones, storms, in every drama, he is the main actor, water. Most atmospheric phenomena are driven by this. And कौन सी एनर्जी लेकर आता है? Water carries some energy in it. Sir, is tsunami come in this chapter? अरे ओशन चल रहा है, ओशन में सुनामी आएगी, बता देंगे, ऐसी बात कर रहा है. सुनामी सपने में भी आती है. ओके, तो व्हाट एनर्जी डज वाटर कैरी? ये बहुत अच्छा आंसर दिया, एकदम सही. किसने आंसर दिया सबसे पहले? आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दैट पर्सन, शुभम सिद्धार्थ. वेरी गुड शुभम. लेटेंट हीट, सर यही समझ नहीं आया मुझे. लेटेंट हीट इज माय प्रॉब्लम. ठीक है, अच्छा. This is amazing storehouse, and I want to tell you 99% of life, 99% of biodiversity lives in ocean. We human beings might think that we are the most superior, पर है यहाँ पर लाइफ, यहाँ पर. ठीक है, अच्छा. storehouse of water, I want to tell you all the gases also. गैसेस जो हमारा ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस. तो गैस बैलेंस, व्हाट डू दे डू? ओशन absorbs carbon dioxide and ocean releases oxygen. How does it release oxygen? Ocean has biodiversity, plants, so it is also your oxygen cycling. Very very important. Ocean इतना ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, so that keeps the planet having its balance of the gases and many other gases. I would also say that ocean is rich in resources. Ocean rocks. We are looking at oceanic rocks. They can be rich in volcanic things coming out of them. So they are rich in sulfur. They are rich in phosphorus. They are rich in metal. So many things are coming out of this. So oceanic rocks are there. Can I say oceanic animals, organisms? Sir, organisms क्या होते हैं? आपने शंख, सीपी, मोती सुना है कि नहीं सुना है? पर्ल्स, ये कौन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कोरल रीफ्स, जो इनके कैल्शियम कार्बोनेट ये चीजें बनती हैं, वो भी ओशन से मिलती हैं. एंड मेनी ऑफ यू आर राइटली पॉइंटिंग आउट दैट we can derive a lot of energy from the ocean. Energy कैसे आएगी? Tidal energy, ocean thermal energy, wave energy. We are looking at many forms of energy. Even the biomass which is there in the oceans can be used and energy can be provided. Is everyone okay? Are we clear on that? First life originated. बेटा यहाँ पे लिख दिया हमने life originated. Somebody is talking about that. Hydrosphere, life originated, that part is there. Biodiversity is there. So I'm saying oceans have a lot of chemistry, physics and biology. मैं तो इनकी chemistry से भी I am always enamored because oceans are salty. Yes or no? Saline. And we get our salt from oceans. Yes or no? Not only salt, so many things are coming out of oceans. And very beautifully, I would like to congratulate Nikhil Vishen for this. Everyone, Nikhil Vishen says, sir, आप भूल गए very very important thing. It is for the heat budget maintenance. Very good, Nikhil. अब एक बात बताइए, everyone. You joined the first class. You were apprehensive. Geography कैसा होगा? मुझे easy लगता है, difficult लगता है. Do you see, as your knowledge is growing, and if somebody is throwing a question at you, give me the significance of oceans, what is hydrosphere? Now do you have the confidence and ability to think and think wide? Can you see, people are full of ideas.
दिस इज व्हाट हैपेंस इन द मेन एग्जामिनेशन. सब अपने अपने आइडियाज लिखेंगे, कुछ रटे हुए लिखेंगे. सम पीपल विल जस्ट राइट मक्ड अप थिंग्स. मक्ड अप थिंग्स वी कैन वेरी वेल सी, ये 4-5 पॉइंट मारते हैं. बाकी लोग, आर दे एबल टू शो थिंग्स और नॉट? I am sure that is going good in your mind, and I am sure this is also increasing your confidence. यार मैं भी सोच सकता हूं. So that is why I have been waiting. I have been telling you answer writing कि मुझे अभी जल्दी नहीं है. I am doing PYQs with you whenever I get chance. Say for example in atmosphere, after as I was ending, I was doing prelims PYQ. I will be doing more PYQ sessions with you so that you get confidence. But the idea is आपको ये लगना चाहिए यार मुझे आता है. I am the one who is at the source of it. If you get that confidence, things will go magic for you. ठीक है. The difference between hydrosphere and ocean. अब देखो ये सोच नहीं रहा है, ये सोच ही नहीं रहा है. There are still people who will be stuck with left brain. Do you see hydrosphere? Hydro means पानी का sphere. पानी का sphere means river. पानी का sphere means pond. पानी का sphere means rainfall. Now you tell me, are there students who are still left brain in the class? Sir, इसका मतलब इसमें difference बताइए sir. You will always find that. So I am inviting you. How many of you are going to make a switch? How many of you are going to make a switch? मेरे पास भी दिमाग है और वो छोटे से दिमाग से भी मैं बड़ी चीजें कर सकता हूं. यहाँ पे चैट वाले तो आपको पता है चैट आने के लिए वो चलता ही रहेगा. तो हाइड्रोस्फीयर और ओशन में अंतर क्या? हाइड्रोस्फीयर, विच वन इज अ सेट, विच वन इज अ सबसेट, जल्दी से बता दो. बिल्कुल, ग्लेशियर भी है भाई, कोई भी पानी हो उसको हाइड्रोस्फीयर है. तो इसलिए भी चैट पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स अपना दिमाग खोलना ही नहीं चाहते. इतना हो गया यहां पर होने के बाद हमने यहां लिख दिया एंड द स्टूडेंट से सर इसमें डिफरेंस तो आपने बताया नहीं. यस और नो? समझ रहे? गुड मॉर्निंग टू ऑल. और अब डबल धमाका चल रहा है. एक तो नवरात्रि चल रहा है और आज से रमजान भी शुरू होता है. तो आप सबको रमजान के लिए भी शुभकामनाएं और नवरात्रि के लिए भी, दोनों चीजें. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियाज कल्चरल मोज़ेक दैट वी हैव. Amazing things are happening and I am sure that both the festivals, the blessings reach you and you do amazing things. ठीक है? ओके, चलिए. तो फिर से इनविटेशन है, सोच बढ़ाएंगे, सोच बढ़ाइए हाइड्रोस्फीयर. बट क्योंकि आपने पूछा तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं. ऐसा कुछ JF Kennedy once said, anyone who can solve the problem of water will be worthy of 2 Nobel prizes. आज वाटर की प्रॉब्लम है and JF Kennedy says that anyone who can solve the problem of water will get not 1, 2 Nobel prizes. One will be the prize for peace and other for the science. Science to isliye because using technology you have solved the problem of water. Why peace? This is indirectly saying that tomorrow there will be conflicts. Tomorrow there will be conflicts and tomorrow there will be fights. Tomorrow there will be fights for water, conflicts and fights for water. ये ना हो, so anyone who solves this is going to do a very very big favor to the world. Yes, do we get that? और ये जो water है, is this ocean water only? No, this is hydrosphere. कोई भी water की problem, and especially in this context, कौन से पानी की बात हो रही है? Ocean water या fresh water? It is about fresh water and I also want to tell you everyone. I also want to tell you that ये जो वाटर की प्रॉब्लम है इंडिया में बहुत सिवियर होती जा रही है. Yes or no? This time the winters was not that severe. Yes, glaciers, they did not get much of their ice. Now glaciers are melting also. Rivers will want water और जल्दी ही गर्मी और बढ़ती जाएगी. Remember February was having a record heat since the recorded time. Water problem is going to come, and this sentence is more about fresh water. It is not about oceans. So again, does it bring you clarity that hydrosphere is the set, oceans is the subset? अब कितना है वो भी करेंगे. तो पहले water पे चले. So I am talking about hydrosphere and I would want you to use your language, use your mind in this and use your language to understand कहा क्या जा रहा है. तो water पे आते हैं. Water का molecule H2O. Little bit quick chemistry revision. H2O. And the interesting thing is, स्कूल में पढ़ा होगा,
वाटर का मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है. पोलर मीन्स इट हैज वन साइड पॉजिटिव वन साइड नेगेटिव, सो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स. Hydrogen bonds form when the positive end of one water molecule bonds with the negative end of the other molecule. Two important properties come, that is why because of the hydrogen bond these hydrogen molecules always stay close together. So ability of water molecules to stick together, उससे क्या बनता है? Surface tension. Remember surface tension? तो कोई भी surface अपना वर्चस्व बनाए रखती है, that is called the surface tension. ठीक है, सतह पे जो बल रहता है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. वो दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड एडहेशन. वाटर किसी भी चीज से भी चिपक जाता है, आपके हाथ पर भी पानी भिगो देता है, गीला करता है. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एडहेशन, द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्टिक टू द सब्सटेंस. छोटी सी चीज है, नथिंग टू डू विद ज्योग्राफी, जस्ट टेलिंग यू दैट वाटर स्टिक्स टुगेदर, मॉलिक्यूल्स स्टिक टुगेदर. द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्ड. कहां पर आएगा? दिस इज डेली साइंस. योर साइंस एंड टेक टीचर विल ऑल्सो टॉक अबाउट. बट वाटर्स यूनिक प्रॉपर्टी इज हाइड्रोजन बॉन्ड. प्रीलिम्स में ऐसी भी बातें आती है, सो आई ब्रॉट इट. वाटर हैज थ्री स्टेट्स. Gaseous state, see molecules are far apart. Molecules when we bring closer, liquid state, and here what does it become? Solid state. And how can it happen? One is temperature. As you cool the temperature, gas will turn into liquid, liquid will turn into solid. Another way is, remember, mechanical pressure. Pressure से भी किया जा सकता है, which we were talking about, subtropical high pressure belt. Is everyone okay? Is everyone okay? So why till yet no one have solved this problem? Okay, time pass wala question hai. Coming back to this, many people have been asking, sir, what is this latent heat? Latent heat. This is ice. Ice will melt, but there were hydrogen bonds. So to break those hydrogen bonds, latent heat of fusion will come. Those bonds will break and then water will turn. Now water also has bonds. Those bonds, if I break them, then water will change the phase. That is called latent heat of vaporization. Remember, we have talked about this. Latent heat means hidden heat. Hidden heat है, और hidden heat की वजह से that does not show, but it is absorbed when ice turns into water, water turns into vapor. When the opposite happens, it is released. Remember, latent heat of condensation drives a cyclone. The opposite will be doing this. This we have already talked of. I thought since we are talking about water, तो एक मौका है to repeat that through pictures. The amount of energy required to break the bond is termed as the latent heat of vaporization. So when water turns into vapor, phase change, some energy is going, and that is called latent heat of vaporization. Water has the highest latent heat of vaporization for any known substance, and this is the latent heat of vaporization which is hidden and stored, which will be released when water vapor condenses and cyclone will be driven by them. I've already talked about this. Then why am I bringing it? So many of you feel कि हमारे पास notes नहीं होते या लिखा हुआ नहीं है, तो ये लिखा हुआ भी आ गया. आपके पास slides मिलती रहती. You can have the slides, so you will have this also. Is everyone okay? Perfect. Now that we have looked at the properties of water, some properties of water, they are not needed in geography, but I was just doing some chemistry and physics with you so that you are prepared. Now we are going to hydrosphere. Somebody asked the difference between hydrosphere and ocean. Yes, your question was valid. I only wanted you to think about it. So let me show you the very clear difference. Everyone, on the earth there is water. On the earth there is water. 71% of that water is covering the earth. Around 29% is land. So this is all water. But is all the water that we have, is it only in this 71% area, or is it on land also? Is it somewhere else also? So that is somewhere else also, and that is in our rivers. Everyone, salt water is oceans. Oceans is how much, bachcho? 97%. 97, some will say 97.5. That is oceans. But there is around 3% water which is outside ocean.
So this whole thing is called, Earth's whole water is called hydrosphere, and only this much is called oceans. Is everyone okay? Do we get the difference? Whole water is hydrosphere and only the saline water is oceans. Oceans are definitely the big part of all the water that we have. 97% is in the ocean. What about that 3%? 3% is fresh water. 3% is fresh water. So it is, I have read the statement that water everywhere, no water to drink. Is this the problem of the world or not? 70% of the earth has water. 70% of the earth has water, but that is not fit for consumption. Yes or no? Not all of it. In fact, 97% oceanic water we cannot drink, we cannot consume. Ye phas gaya. Bacha 3%. Thankfully, we have 3%. Now, in this 3%, let us make this 3% as 100%. Most of it, 2/3 of this 3% is in ice caps. ये तो ग्लेशियर में हम पहुंच ही नहीं सकते. Everyone, 97.5% and 1.7 is trapped in glacier, snow and permafrost. ये भी accessible. So this is yellow in color, so that is why I brought this one, so that you can see black in color. It will be more visible. Ice caps में, so out of this 3%, 2/3 is in ice cap. तो जो बचा है वो कहाँ है? वो ग्राउंड वाटर में. 30% is in ground water. Where is fresh water left? Only here. A little bit is left, around 1%. 1% of the total fresh water. If I take 3% का भी 1% अगर मैं निकालूं, so that is fresh water. And where is it? Mostly it is in lakes, then swamps and then rivers. तो आपका और मेरा जीवन किससे चलता है? It goes by rivers. और सोचिए रिवर कितना, प्लैनेट के पानी का कितना हिस्सा कैरी कर रही है. हाउ मच वाटर आर द रिवर्स कैरिंग फ्रॉम द प्लैनेट? 97% ऑफ द वाटर इज गॉन इनटू द ओशंस. 3% is left. Of that 3%, 2/3 goes into the ice caps. Almost 1/3 is into this only. थोड़ा सा बचता है, little bit, and that also goes into lakes. Lakes are a bigger reservoir of fresh water. Lakes are a bigger reservoir of fresh water than the rivers. We get that rivers बहुत थोड़ा सा amount है. And which lakes? Any lake that comes to your mind which is having? Any lake which is having that? Any lake? The Great Lakes of America. The Great Lakes of America, not Wooler Lake, but Great Lakes of America. That is what we are talking. Is everyone okay with this? Is everyone okay with this? एक कॉमन सेंस का सवाल पूछना. Okay, everyone. There is land. Everyone, please pay attention. There is land. Get that? And there is a mountain on this. There is a mountain on this. You have to select where do you make a house, X or Y. Where would you like to make a house, X or Y? X or Y. You have 10 lakh रुपये, 10 लाख रुपए. कहाँ पे बनाना चाहोगे? X. Easy. Difficult? Yes or no? On a mountain, is it difficult or not? Somehow you were able to make a house. इधर भी बनाया, इधर भी बनाया. And now you want to sell the house. How much the cost went into it? Let's forget it. You want to sell the house. Now, which house will give you more profit? Which house will give you more profit? You invested 10 lakh in this to construct this. To construct this, you had to invest 15 lakh. ज़्यादा लगेगा ना पैसा. And now market price is 10 lakh. Will this be in loss or not? True. कोई कह रहा है काटाबेटिक. अबे काटाबेटिक की बात नहीं हो रही. दिमाग लगाओ, लेफ्ट ब्रेन से मत सोचो. ये प्लेन है, ये हाईलैंड है. कहां पर आसान होता है? सोचो, घर बनाना है आपको, मैदान में बनाना है और जाकर उत्तराखंड में कहीं बनाना है. कहां पे सस्ता बनेगा? कैटाबेटिक. ये लेफ्ट ब्रेन है. जो बेचारा सीखता है लेफ्ट ब्रेन, वो वहीं पे स्टक हो जाता है. उसके आगे सोचो बच्चे, कहां पे घर बनाना इज इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव.
प्लेन में बनाना. सो दिस वाज अ कंपैरिजन बिटवीन प्लेन एंड हाईलैंड्स. इज एवरीवन ओके? नाउ एवरीवन, there is a river, there is a river flowing, and it comes and merges with the sea. So this is oceans. Get that? Person here wants water to drink. Person here wants water to drink. Do they both have water next to them? Yes or no? Do they both have water next to them? दोनों के पास पानी है, A and B. Why are we saying that B has crisis and water at A? The person A is lucky. Both of them are having water. Okay? So because this is salty water, you cannot drink it. Exactly okay. Now comes a simple idea. This is water. What water is this? Salty water. Everyone pay attention. This is salt water. Salt water. What you do is, you start heating it. You start heating it. You start heating this. What will happen is, this water will evaporate. This water will evaporate. And when evaporation happens, only water goes up, salts don't go up. Only water goes up. Evaporation में जब भी होगा, भाप बनेगी, salt यहीं रह जाएगा. This is a simple principle. If you are taking salt water and evaporating it, what will happen? Only water evaporates. What you do is, you collect the vapor. आप क्या करेंगे? Collect the vapor. Collect vapor. ठीक है? Cool the vapor and collect fresh water. ये क्या प्रोसेस है? This is the process of converting salt water to fresh water. Is everyone okay? This process is called distillation. हमने क्या कर दिया? Distillation कर दिया. Distill. Is everyone okay? True. Why are we saying then this is crisis? Why aren't we saying that this fellow is also lucky? ये क्यों lucky नहीं है? कर ले, ये क्या प्रॉब्लम है? What is the problem? This process is called distillation. एक काम करो, डिस्टिल कर लो, क्या टेंशन है? What is the problem? This vapor, collect the vapor, cool it, it will condense and fresh water. Simple process. What is the problem? Sir, we can't drink distilled water. क्यों नहीं कर पी सकता भाई इसको? इसको कंडेंस ही तो किया आपने. ऐसे ही बनता है, इसको फ्रेश वाटर जनरेशन कहते हैं. आप पी सकते हैं, मैंने पिया भाई. कह रहा ये पानी नहीं पी सकते. शिप पे ऐसे ही पानी बनाते हैं हम लोग. फ्रेश वाटर जनरेटर होता है. वी कलेक्ट सॉल्ट वाटर, वी एवापोरेट इट एंड वी कंडेंस इट. ऐसे फ्रेश वाटर जनरेटर होता है. ये सर. So this is for the left brainers who are saying, sir, why can't the sea water be used? सर उसको, उससे पानी बना लो, फ्रेश वाटर बना लो. सोचो, दिमाग लगाओ. थिंक ऑफ योर प्रोसेस. कौन करेगा ये? Where will you get this fuel from to heat it? Where will you get this process? बहुत मेहनत लगेगी. Yes or no? वही वाली बात. माउंटेन पे घर बनाना है. Is it going to be costly or not? Use your right brain. True or not? Costly, time taken, it should be managed. And above all, river water is a blessing. वो तो फ्री में आ रहा है. फ्री में आ रहा है. यहां पे बहुत सारी चीजें करनी पड़ जाएंगी. And till now, that is why the question was, anyone who develops the solution to the world water problem, will it take science? If you can find a cost effective way, quick way of converting salt water into fresh water, you have solved one of the biggest problems of the world. You deserve to get the Nobel Prize of Science, and because that will stop wars between people, Nobel Prize of this. Darshan Bhagat is saying Saudi is doing it. Darshan Bhagat, thank you for informing. Did I not tell you I was doing it on the ship? तो दर्शन भगत को लगा कि ये चचा बताएंगे कि सऊदी कर रहा है.
सऊदी नहीं, दर्शन भगत, ऑल कोस्टल सिटीज आर डूइंग। आपको नहीं लगता दुबई कर रहा होगा? तो चचा ने बता दिया तो हमें भी पता है। चचा चचा हम डेली बनाया करते थे 13 टन पानी, फ्रेश वाटर जनरेशन। चचा फ्यूल लगता है। आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन दर्शन सर? सर व्हाई अरब नेशंस आर फोकसिंग ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग? अब बताओ यार। एवरीवन, विच इज अ ब्लेसिंग, रिवर वाटर एंड वाटर विच इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्काई? ये भी तो काम का है ना, रेन वाटर। अब एक पूछ रहा है, इमेजिन पढ़ रहा है, एंड आफ्टर दिस डिस्कशन ऑल्सो समबडी इज आस्किंग सर व्हाई पीपल आर कलेक्टिंग रेन वाटर। अरे भैया, think about it. After today's discussion, somebody is asking, sir, why people are thinking about collecting water? That is the way ahead. That is the way ahead. Nature is doing this process for all of us. This process, who's doing this for all of us? Everyone who's doing this for all of us? Nature. That is called hydrological cycle. बच्चों, what is rain? What is rain? What is rain? Rain doing, कर क्या रहा है rain? This is ocean water. Ocean water has got what? Salt, yes or no? And what is happening? Every day it is evaporating. Evaporating and clouds are coming. ये वही तो हो रहा है. Same process which we would have done, and these are producing rain here also, and when they travel with the winds, they produce rain on land also. और यहां पर पानी आ रहा है. Now imagine there is a country which doesn't have other sources of fresh water. Is it wise? Is it wise? यहां पे बाल्टी लगा के इकट्ठा करो. Is it wise or not? And everyone, you don't have to go to. You don't have to. You don't have to think about collecting or something about Saudi Arabia or UAE. You tell me, aren't people of Rajasthan in India used to collecting it? Not only Rajasthan, I want to tell you, even hilly area people, they collect it. ये तो हमारा wisdom है. This is our wisdom. Yes or no? Everyone, whatever I have told you, whatever I have told you till now, yes, what is the conclusion? What is the conclusion? A, therefore, fresh water management is important. Or because of today's discussion, this discussion tells, therefore, sea or oceans have salt. जल्दी से बताइए कौन ये कहना चाह रहा है कि आफ्टर डिस्कशिंग दिस वी हैव कम टू कंक्लूजन ए और बी? बी किसी को लगा? एनीवन? After talking what I have done, that there are oceans are salty and we must look at the natural ways, how many of you would come to the conclusion, okay sir, we understand, therefore fresh water management? Does anyone come to the conclusion, oh, therefore oceans have salt? Did I anywhere talk about oceans have salt? Do you get that? Left brain, right brain? After this discussion, do you come to this conclusion? After this discussion, do you come to this conclusion? अगर आप आ रहे हैं तो what were you understanding? Somebody asked me, oh sir, that is why oceans are salty. Is that the reason why oceans are salty? हमने कहीं भी reason की बात की? Did we talk about anywhere in the reason? Why is someone asking me this question? Oh sir, that is the reason why oceans are salty. नहीं आया ना ये? Do you understand? Total left brain. I don't even understand. It's like, you are studying geography with me. Geography, you studied geography with me, you study physical geography with me, you study world geography with me, you study Indian geography with me. Therefore, you will have 2 children. है? मतलब ये क्या हो गया? I taught you physical geography, world geography, Indian geography, therefore you will have 2 children. ये तगड़ा conclusion है. Well, I was shocked after reading that. Sir, ये therefore is this the reason why oceans are salty? भाई बात ही नहीं की. ऐसे कहां से लाते हो? कहां से लाते हो? जय माता दी. या रमजान मना रहे हो? क्या मना रहे हो भाई?
कौन सा, नवरात्र का असर है या रमजान का असर है? बच्चे लॉजिक कहां गया? वेयर डिड योर लॉजिक गो? डिड वी टॉक अबाउट दिस? नाउ लेट मी टेल यू व्हाई दिस हैपेंस. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई दिस हैपेंस. ठीक है, वी हैव टू प्रूव a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. I don't know how does it happen. तो मैं क्या लिखता हूं? टक 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 टक. Therefore LHS is equal to RHS. Yes or no? ये अपना सर्वाइवल स्टंट है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्नड दिस इन द स्कूल? आता हो नहीं आता हो, आखिर में LHS इज इक्वल टू RHS कर लो. ये सुनो, किसी भी तरह से तो ये पढ़ाया मैंने. आई एम वेरी सरप्राइज. मैं बात कर रहा हूं यार, ओशन में, वर्ल्ड में पानी की कमी है, फ्रेश वाटर की कमी है. देयर इज लॉट ऑफ वाटर इन द ओशन and we must be mindful. This is the process. It will take costly. It is possible. Saudi Arabia is doing, many countries are forced to do this. They are doing this, no doubt about that, but this is not the solution, because a point will come we will require energy. Okay sir, इसलिए ocean salty हैं, therefore the oceans are salty. भाई सुबह सुबह मतलब हंसते हंसते टीचर की जान ना चली जाए, ऐसा मत करो. मेरी जान क्यों ले रहे हो यार? इतने तो होली समय चल रहे हैं हिंदू धर्म में भी और इस्लाम में भी, ऐसा मत करो. ठीक है, कोई बोला यूज्ड इट ओनली इन मैथ्स, यहां भी यूज हो रहा है यार, इसलिए ओशन सॉल्टी है. तो बच्चों ओशन सॉल्टी क्यों है वैसे? अगर अब इसी पे आ जाते हैं, अब जब तुम्हारा मन है चुटकुले का तो मैं भी चुटकुला सुना सकता हूं. तुम्हारा मन है चुटकुले का तो मैं भी सुना सकता हूं. इज दिस द रीजन व्हाई ओशंस आर सॉल्टी? एंड ये उन स्टूडेंट से आता है जो ज्योग्राफी पहले कर चुके, वो वाले हैं खतरनाक वाले. So why oceans have salt? Why oceans are salt? इसका जवाब is a problem. Why oceans are? This is a problem. There is a problem, and the problem is that most of you have not seen the ocean. है ना? घर बैठे बैठे अंदाजा लगा रहे हो. Never seen the ocean. Never seen. इन द ओशन दूर हो गया, फिर यू हैव नेवर टेस्टेड सॉल्ट वाटर, कभी पिया भी नहीं. एंड इन फैक्ट इट इज टोल्ड अगर कोई शिप डूब रहा है, इफ अ शिप इज सिंकिंग, तो शिप से लोग किस में उतर जाते हैं? बोट में उतर जाते हैं. यू कम इन द बोट. नेवर ड्रिंक सी वाटर. सी वाटर विल किल यू. सी वाटर विल किल यू. इफ यू ड्रिंक सी वाटर विल किल यू. And you know what? Sea water will kill you by what? Dehydration. सूखा के मारेगा. Look at the funny thing. If you take sea water goes inside. Sea water is very saline. Your body has some water already. What will happen? Osmosis will happen, and your body's water will start mixing in that. You will die of dehydration. Never. It is not because of impurities बच्चों. When you take too much concentrated salt water, आपकी बॉडी में रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा. ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोसिस समझाना थोड़ा मुश्किल है. एंड दैट विल बी. ठीक है, एक ढक्कन अभी बोल रहा है आई हैव ड्रंक सी वाटर, आई एम अलाइव. आप समझ रहे हैं चंपक क्या बोल रहा है? आप समझ रहे हैं? मैंने भी पिया सी वाटर. ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में सोडा के साथ शाम में पिया, बट ये ढक्कन कल भी था, ये आज भी है. Yes or no? Is everyone with me? So this will continue. So are you able to get the audio? For some reason the video is gone. Don't worry, it's a power cut. I don't want to bring osmosis over here, but high concentration of salt, and there is a ढक्कन who's sitting here who says मैंने पानी पिया, मैं जिंदा हूं. हाँ भाई, तू एकदम गजनी है, पुरुष नहीं महापुरुष है. आप उस श्रेणी के नहीं हो, बहुत बड़ी चीज हो. इसने समुद्र का पानी पिया, ये जिंदा है, ये लेफ्ट ब्रेन है, इसने थोड़ा सा चख लिया और ये जिंदा है. आई सेड इफ यू ड्रिंक इट द वे कि आज प्यास लगी, आज भी पिया, 2 बार पिया, 4 बार पिया, देन दैट हैपेंस. इज एवरीवन ओके? ऑल द पीपल हु फेल्ट द वीडियो हैज गॉन ब्लैंक, डोंट वरी, इट वाज जस्ट अ पावर कट. ओके एवरीवन. तो पानी आया, सॉल्ट आया कहां से?
So where is the salt coming? Yes, I know my audio has a backup. My video doesn't have a backup, so that is why. Is everyone okay? तो आया कहां से? लोका इज सेइंग हाउ कैन वन ड्रिंक इट? समुद्र में जाओ पी लो यार. कह रहा है हाउ कैन वन ड्रिंक इट? समुद्र में जब डुबकी लगाते हैं मुंह खोल के डुबकी लगा लो, मुंह में चला जाएगा, बाहर निकल आएगा, क्या टेंशन है? मतलब इमेजिन द क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर कोई उसे कैसे पी सकता है? ऐसे ग्लास लेना है, उसमें डाल देना है और पी जाना है. ऐसे पी सकता है बच्चे? कैसे कैसे सवाल पूछते हो, मतलब मेरे होश उड़ जाते हैं कि कोई कह रहा है कैसे पी सकता है. कैसे पी सकता है बच्चे? और आप सिचुएशन सुनते ही नहीं हो. यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू मी. आई सेड अ शिप इज ड्राउनिंग और उस शिप के साथ एक लाइफ बोट है. यस सुनो. इज एवरीवन ओके? तो महापुरुष अभी जिंदा है, ये अच्छी बात है. महापुरुष जिंदा ही रहने चाहिए जब तक वो जिंदा है, अच्छी बात है. उन्होंने समुद्र का पानी पी लिया था लेकिन वो अभी तक मरे नहीं है. चचा जो है जिंदा है. ये तो सब हो गया. आगे बढ़ते हैं. वेयर आर वी? हियर. So where did the salts in the ocean come from? Salts in the ocean come from. Salts in the. So first of all, we will have to understand that the salts are, majority salts are sodium and chloride. Sodium chloride, people who do not know sodium chloride, वो आपके घर में जो salt है, और salt at home, that is there, plus magnesium, plus calcium, chlorides, carbonates, these are found. So it can be sodium bicarbonate, chloride, magnesium chloride, magnesium, these are there, most of it. But ये क्या है? This is majority. That is why I said no. Telling that will become a challenge because many of you have not seen the ocean. अभी जैसे किसी ने कहा, it's a very innocent question, sir. How can I drink water? You go and take a dip in the water. रामेश्वरम में लोग जाते हैं, समुद्र किनारे जो है अपनी डुबकी लगाते हैं. मुंह खुला हो तो मुंह में पानी जाएगा. आप हरिद्वार में गंगा में जाते हैं, डुबकी लेते हैं, तो मुंह में पानी जा सकता है कि नहीं जा सकता? एंड दैट टेस्ट वेरी डिफरेंट. उसमें जो भी गंगा में डुबकी लगाने आया, उसका नियम है डुबकी लगाने से पहले सारा तेल लगाएगा. वो सारा तेल आपके मुंह में जाने वाला है, आपको पता है, दुनिया भर का लगाने वाला है. ठीक है. इज एवरीवन ओके? So that's what we are talking about. That's what we are talking about. कि NaCl ज्यादा मात्रा में. Now comes the question. Now comes the question. Where is this coming from? So ये land है. This is land and this is ocean. Land and this is oceans. Many people are saying कि rivers लेकर आती, river लेकर आती. Is the river water salty? We were to just saying that river water is not salty. So there are two categories of water. One is salt water, other is fresh water. So river is salt water or fresh water? River is fresh water. River is fresh water. तो अगर river के पास fresh water है, fresh water cannot make this water salt water. Fresh water cannot. And river को आप चेक करेंगे. river if you have, आजकल शहरों में लगता है ना RO लगता है, RO में वो आपके सॉल्ट भी बता देते हैं. रिवर वाटर में पता कौन सा सॉल्ट होता है? कैल्शियम होता है. सर मैंने तो कभी नहीं देखा. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं. एवरीवन बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दिस? द टैप एट योर होम, यहां पर कितने लोगों ने देखा है सॉल्ट जमा हो जाता है? हैव यू सीन दिस सॉल्ट? व्हाइट कलर का सॉल्ट डिपॉजिट होता है. कभी खा के देखिएगा इसको. ईट दिस. सर क्या बात कर रहे हो, गंदा होता है. टेस्ट करने के लिए देखिएगा, कैल्शियम है. कैसा टेस्ट करेगा? चॉक. स्कूल में चॉक खाया कभी? बहुत लोगों ने, सर मैंने कभी नहीं खाया सर. व्हाई वुड आई ईट चॉक? वेल, children with calcium deficiency has a tendency to not only eat chalk
बट इवन लिक द वॉल्स, घर में आसपास चूने की दीवार वो चाटते पाए जाते हैं, तो कैल्शियम वो होता है। तो अगली बार अगर उस पर थोड़ा सा चूना दिखाई दिया, अगर मुंह में डाल लोगे कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने कभी चौक नहीं खाया, मैंने कभी दीवार नहीं चाटा, कोई बात नहीं, यू वर ओके, यू वर लकी, यू डिड नॉट हैव अ कैल्शियम डेफिशिएंसी, बट ये कैल्शियम। तो नदी का पानी इज नॉट सॉल्ट वाटर। यहां NaCl आया कहां से? तो आंसर इज दैट दिस सॉल्ट केम अलोंग विद द अर्थ। अर्थ का डेंसिटी डिफरेंशिएशन हो रहा है, अर्थ के अंदर ही उसका सॉल्ट है, एंड दैट हैज बीन देयर, सो दिस इज द अर्थ्स इंटीरियर। Sir, how did it come out? How did it come out? It came out with volcanoes. And remember, NaCl is soluble in water. NaCl is soluble in water. तो volcano में आया, volcano में बाहर आता है, it becomes a rock. It becomes a solid rock. Rain falls on it, river flows on it. What will happen? They will dissolve it. Progressively what has happened is all the planets NaCl, most of it has come here. So rivers right now are having fresh water, but this has come along with that. ठीक है, everyone okay? जिन्होंने चौक खाई उन्हें पता है चौक में कोई टेंशन नहीं होती। तो चौक तो बहुत खाया, दीवार नहीं चाटा, इट्स ओके, परफेक्टली ओके। सॉल्ट एक्सट्रैक्शन बीच पर ही होता है। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। सॉल्ट कैसे निकलता है इस प्रोसेस से? ऑन दिस साइड व्हाट आर वी गेटिंग? फ्रेश वाटर। इस साइड पे क्या बचेगा ज्यादा? एवरीवन टेल मी व्हाट विल बी हियर, व्हाट विल बी लेफ्ट हियर? मोर ऑफ इट, सॉल्ट। तो दिस इज हाउ गुजरात एक्सट्रैक्ट सॉल्ट। वो क्या करते हैं, सी वाटर को आता है, टाइड पे सी वाटर कम्स, दे ट्रैप दैट सी वाटर इनटू स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड by making embankments and allow that sea water to evaporate. Sea water evaporate हो जाएगा तो क्या बचेगा? Salt बचेगा. And I also want to tell you one more significance of oceans and salt is it helped in our freedom struggle. गांधी जी की दांडी यात्रा, जिसमें गांधी जी decided to disobey the salt law that the British government was taxing salt also. Gandhiji was of the firm opinion that natural things, water, air and salt which nature gives us, how can you tax it? उनका सॉल्ट हम खुद बनाएंगे। सो दांडी यात्रा किस चीज पर थी? इसी पर थी। तो सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट वाटर को इवेपोरेट कर दो, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज सॉल्ट, एंड इफ यू कलेक्ट दोज वेपर्स आर गिविंग यू फ्रेश वाटर। समझ में आ गया? इज एवरीवन ओके? तो दांडी यात्रा और उससे जुड़े गांधी जी की सोच, एंड गांधी जी वॉज वेरी क्लियरली टॉकिंग अबाउट वन थिंग। गांधी जी ने कहा कि आई विल एक्सपोज द इमोरलिटी ऑफ ब्रिटिश रूल। These Britishers say white man's burden, that they are doing good to India by ruling them. Gandhi ji said, people like you do not deserve to rule Indians and India. He said, your morality can be shown where you are putting a salt tax. तो यहाँ पर हुई थी दांडी यात्रा। Is everyone okay? The salt was very costly those days. बेटा costly भी है और टैक्स भी था उस पर। गांधी जी ने कहा कि ये क्यों हम दें, तो इमोरल था। तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। सर माय होम इज नियर सी, दीघा बीच पर मैं हूं। अर्लियर पीपल यूज्ड टू मेक सॉल्ट, राइट नाउ दे हैव स्टॉप्ड इट। तो प्रीतम इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ही इज लिविंग नियर दीघा बीच एंड ही सेज पीपल आर डूइंग दैट। वेल आई थिंक वेरी ह्यूमिड कंडीशंस है। वेस्ट बंगाल इज मोर ह्यूमिड ओवर देयर। व्हेन वी कम टू गुजरात रीजन जहां पर ये होता है वो सेमी एरिड ज्यादा हो जाता है, दैट रीजन, you get that? तो वहां पे एडवांटेज हो जाता है। अदरवाइज आई कैन अंडरस्टैंड दैट सॉल्ट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन द कोस्टल एरियाज। So why sea has high concentration of salt? Why? Everyone, the planet has sodium chloride. It got dissolved in the water, and where did it go? It went into the ocean basins. Now progressively over millions of years, that salt NaCl has got collected. NaCl has got collected over millions of years. That is why the concentration is high. Is everyone okay? Are we clear? Are we done with this? Why are oceans salty? We are done with this also. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's move further.
B. You looked at this data will help you. You can use that. The slide will be given to you. Oceans help in sustaining. Now we are coming to oceans. Everyone, I am leaving fresh water now. Fresh water, Dandi Yatra, everything is gone. Everything is gone. Now where are we? Now we are into oceans. Oceans are key to sustaining life. More than 70% of the earth, they constitute one of the most essential bases. Marine biodiversity, among other things, are there. This we have already discussed. This is for your notes. So some people who want notes, unke liye ye hai. Let us come to the 5 oceans. Let us come to the 5 oceans. So how many oceans did I tell you? World mein to ek hi ocean hai. World mein ek ocean hai, but we have divided it. So let us look at oceans. Once again, I have already talked about this once. So oceans of the world. Everyone, are we clear what is hydrosphere? And are we clear that the same water has been moving from the oceans on the land, and that cycle is called the hydrological cycle. Now we are coming clearly to the oceans. Clearly to the oceans. We are coming to the ocean. So first of all, 71% is covered by water. I would like to call it the world ocean. Chalega? The world has one ocean. And what has happened is that we human beings have divided it into smaller units. We have divided it into smaller units, and we agree that there are 1, 2, 3, 4, 5 oceans. 1, 2, 3, 4, 5 oceans. The largest is the Pacific Ocean. The name was given by Ferdinand Magellan. So you can write this also. Magellan. He was an explorer, navigator, the first person to circumnavigate. Is everyone okay? Pacific Ocean. Then what do we have? Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. And then what do we have? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean. Indian Ocean. Then number 4. Number 4. Southern Ocean. Number 5. Arctic Ocean. Southern Ocean, Arctic Ocean. This is the small. Okay. There is a family who has 3 children. Manish, Sarita, yes, and Rahul. Family has 3 children, Manish, Sarita and Rahul. Do we want to know the basis? इसका कोई basis है? ये नाम क्यों रखा है? Is there any basis for this? Is there any basis for this? किसने choose किया? Who chose it? Everyone, who chose it? Who chose it? Mama, Papa? Mama, Papa decided Manish, Sarita, Rahul. Yes or no? हो सकता है ना? Parents. Now, this is world ocean. Who chose it? Human beings. Sir, what was the criteria? I don't know. I can tell you one criteria. So this is Earth, and on the pole there is generally this thing called as North Pole. North Pole को point करता है a constellation which is called the Great Bear. Great Bear constellation points. So north में there is a constellation जिसको we call it Saptarishi. So these Europeans, they call it Great Bear. Great Bear in Greek language, bear is Arctos. Arctos in Greek language. So the ocean that lies in the north, they decided to call it Arctic. Yes or no?
तो अभी लेफ्ट ब्रेन का क्या होगा कि सर इसका नाम क्यों पड़ा ये बताइए. I was taking an interview of one of the students. He's an IPS officer right now. He's an IPS officer right now. His name is Manush. I said, what does Manush mean, beta? He says, Man comes from the first three words of my father's name and USH comes from my mother's name. Possible? Manush. अब आप सोचिए, मान से उनके पिताजी का नाम क्या होगा, USH से उनकी मम्मा का नाम क्या होगा. I don't have to tell you this. कोई कह रहा है सर इसकी जॉटिंग करें. आई होप यू विल अप्लाई योर माइंड. दिस इज वर्थ जॉटिंग. ये मत लिखना मनीष, सरिता, राहुल. तो लोग बैठे बैठे क्या करेंगे लोग बैठे बैठे क्या करेंगे, सर अभी बताओ, अभी बताओ ये किसने किया. तो लेफ्ट ब्रेनर्स विल ऑलवेज डू दिस. ठीक है. कुछ लोग और भी ज्यादा लेफ्ट ब्रेनर हैं, कुछ लोग और भी ज्यादा लेफ्ट ब्रेनर हैं. तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया में एक यूनियन है. वी आर अ कंट्री called India. Then what do we have? States. Then what do we have? Districts. Then what do we have? Blocks. And then what do we have? Panchayats. Yes or no? Why did we divide it into this? For administrative convenience. Yes or no? प्रशासन करना है. एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन. जो आप डीएम बनना चाहते हैं ब्लॉक पे हो सकता है, ब्लॉक ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट, और पंचायत में सरपंच. किस लिए किया? दिस इज फॉर दिस थिंग. तो एक ये पूछ रहा है, सर व्हाई डू वी डिवाइड ओशंस. अरे चचा, बताने के लिए, थोड़ी मदद के लिए, अपने आसानी के लिए किया जाता है. एक बैठा, सर डिवाइड क्यों करते हैं. दूसरा बोला, सर यही नाम क्यों रखा. बताया भाई, जो भी होगा. कुछ लोग गैस कर रहे हैं, जो भी नाम गैस करना है. आपको समझ में आया. यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई आइडिया ये था कि देयर वाज अ फुल वाटर बॉडी. 71% of the earth was covered with it. Some names were to be given. People who were using it, who were these people? The Europeans. They were the ones who went exploring. जो नाम उन्होंने रख दिए वो रख दिए. They kept those names. That's it. Yes or no? अब हमने सुना है एक राहु होता है, एक केतु होता है. सर राहु को राहु क्यों कहा जाता है, केतु को केतु क्यों कहा जाता है. देखिए, आपका नाम है सोनू, आपके भाई का नाम है मोनू. वैसे तो अगर आप लगते तो एक का नाम सोनू रखते, एक मोनू रख देते, बट आपसे पहले वो चले गए इसलिए उन्होंने राहु केतु लिख दिया. आप पहुंच नहीं पाए थे. दैट्स द इशू. यस और नो. तो प्लीज डोंट गेट अननेसेसरीली कॉट इन रॉन्ग आइडियाज. बट हाँ, ये जरूर है कि कौन सी एजेंसी इसको देखती है. IHO, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन. IHO has given recognition to Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. ठीक है. पहले there were times only three oceans were there. Pacific, Atlantic and Indian. But later on they said no, one ocean is separate, which is frozen water in the north. उसका नाम कर देते Arctic. अच्छा, अब ऐसा कुछ हुआ कि this is Arctic. Everyone, can I say this is number 5? There is Pacific, there is Atlantic and there is Indian Ocean. इतना ही हो रहा था. ठीक है. तो 1, 2 and 3 and this was that. People realize, the scientist, not you. तुम तो ज्योग्राफी से कितनी मोहब्बत है तुम्हारी, 20 दिन पुरानी मोहब्बत है, 20वीं क्लास है. आधे लोग तो कह रहे हैं ज्योग्राफी कितनी क्लास में खत्म कीजिएगा. ये सुनो, इनको पहले वो न्यूक्लियर फ्यूजन करनी है, उससे पहले इनको टाइम चाहिए. अरे भैया, क्वेश्चन ये पूछते हो कि सर इसको डिवाइड कैसे किया. तुम अपने क्वेश्चन तो देख लो. एक कह रहा मैंने पानी पिया समुद्र का, मैं आज भी जिंदा हूं, बाहुबली. रोको यार. एवरीवन, दिस वाज द सिचुएशन. नाउ व्हाट हैपेंड वाज scientists, not you, not me, scientists found यहां पर ना एक करंट बहता है. there is a cold current and this is circum-Antarctic, and you know that there is a continent over here. This is Antarctica. So this current sort of does not allow the water of Pacific, Atlantic and Indian Ocean to mix, and this water is unique. ये पानी अलग है. This is very unique. Biodiversity is there. So there is a huge demand. यार इसको कुछ नया नाम दे दो. Please do not consider that as a part of Pacific Ocean. Please do not consider this as a part of Atlantic Ocean. Please do not consider this as part of Indian Ocean. So there was a proposal that this line is 60 degrees south. Let us declare this as Southern Ocean.
There is a proposal. IHO has not recognized it, but an organization called National Geographic has given it recognition. ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये जीके का सवाल है. दिस इज अ जीके थिंग, दिस इज अ जीके थिंग, सिंपल जनरल नॉलेज थिंग. आई थॉट इट विल हेल्प यू बिकॉज somebody asked a question, सर ये नाम क्यों रखते हैं, वाई आर वी डिवाइडिंग इट, खाली बैठे हैं क्या डिवाइड कर रहे हैं. यस, वी आर डूइंग इट फॉर कन्वीनियंस एंड द नेम्स हैव बीन चेंजिंग. आर्कटिक, आई टोल्ड यू, comes from the word arctos. Arctos, something that lies in the north. Pacific, I told you, Magellan, Ferdinand Magellan went into Pacific Ocean first time and he is the navigator who crossed the ocean for the first time. पूरा का पूरा circumnavigate किया. He found the ocean very very शांत. शांत means pacified. उन्होंने नाम रख दिया Pacific. Pacified से क्या नाम रख दिया, Pacific. सर बहुत मजा आया सर, क्या सही कहानी सुनाई सर, अब मेरा जीवन सुखी हो गया सर. Not needed for the exam, no. है ना, हर एक की कहानी. इज एवरीवन ओके? हाँ देखो, ये किसी ने लिखा है, सर एज अ चाइल्ड वी यूज्ड टू रिमेंबर इट अंटार्कटिक ओशन. वेरी गुड. तो पहले इसको अंटार्कटिक ओशन भी कहा गया, अंटार्कटिक ओशन भी कहा गया, बट देन व्हाट हैपेंड, वी फाइनली हैव सेटल्ड फॉर नॉट नेमिंग इट सदर्न ओशन. सो ऑल वाटर साउथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड सदर्न ओशन, और आर्कटिक तो आर्कटिक है. समझ में आ गया? 5. इज एवरीवन ओके? Antarctic Ocean is unique in this. Sir, provide class drawing PPT also. It will be very helpful. Pranjal, it's difficult to save them and keep track of them, and that is why I say keep jotting in the class. I understand when you keep your pens moving and writing something, that also registers in your mind. So please don't cut on that. Please don't cut on that. That your efforts. I want you to be a little stretched. आप थोड़ा stretch होंगे, that will help you. So please bear with me. इज एवरीवन ओके? तो आपके भयानक सवालों के भी उत्तर मिल गए. क्यों इसका नाम ऐसा रखा गया, मैंने ये तक बता दिया कि माँ बाप जो है, माँ और पिताजी का नाम जोड़कर भी बच्चे का नाम रख सकते हैं. सो बहुत सारे तरीके हैं, बट दीज आर क्वेश्चंस व्हिच डोंट कैरी. सर ये पैसिफिक का पी ऐसे क्यों बनता है, पी वैसे क्यों नहीं बनता? तो लेट्स नॉट डू दैट. एवरीवन ओके? सो कीप जॉटिंग. ये सर्कल तो आप बना सकते हैं यार, कम ऑन, यू कैन मेक दिस सर्कल. पैसिफिक, अटलांटिक. सर आपकी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही. अरे आई एम स्पीकिंग बच्चों, पैसिफिक, अटलांटिक, 1 2 3, इट इज देयर ऑल्सो. And the funny part is, just in case you miss it, bachcho, this is a recorded class. In an offline class, what happens is, you get an access to the class only once. But in an online class, बच्चे फिर से देख सकते हैं. ठीक है? So I know you are jotting, so that's it. थोड़ा सा फिर भी आपकी मदद के लिए, I brought something about this ocean. I know you people want content also, so I am not going away. This is Pacific Ocean, and I have not taught you how to draw the world map. After general geography is over, I will take you to world geography. In world geography, you will know quickly how to draw all these things. So don't worry, I have it planned for you. The Pacific Ocean is the largest ocean in the world. It covers nearly 1/3. So all the fact lovers, left brain, is left brain needed in the exam? We need facts. So I should provide it. I provided it in the picture. Comparative also. See, this is the largest ocean, 33%, almost 1/3 of the ocean. Then Atlantic Ocean smaller, then Indian Ocean further smaller, then Southern Ocean. So everything has been written also, shown to you also. Atlantic Ocean is the second largest ocean, separates North America, South America from this side, Europe and Africa. This makes it a very very important ocean, because both are developed continents, Europe and North America. Very important for trade. Not true for South Atlantic. Not true for South Atlantic. Is everyone okay? Indian Ocean is our ocean. We will be talking about this also, and this is there. Sir, ये slide के अलावा I am going to one by one. Let's spend some time on this. Pacific नहीं है, Pacific. ये तो slide went wrong. ठीक है? So everyone, whatever is there, ये diagrams कहाँ पर है? NCERT में. NCERT, so that now my students have done lithosphere, my students have done atmosphere. Today is the time that we come to hydrosphere also, start looking into the oceans. So let me quickly take you through the oceans. जल्दी से मेरे स्टाइल में. And everyone, I hope you are assured that the slides will give you everything. तो जिसको भी चिंता है कि सर मैं लिख नहीं पाया, first understand it my way,
let me make you understand that, and then it becomes very easy. So and if you're not able to draw it, no problem, you just write down. आप heading दे दो Atlantic Ocean, sir is telling me about Atlantic Ocean, and you write your bullets, and I am to drawing it. तो इतना ही बनाना होता है. Get that? Very simple. Now, first of all, what is the shape of Atlantic Ocean? Atlantic Ocean is the second largest. Second largest, is everyone okay? Second largest. Atlantic Ocean, North Atlantic Ocean is very, very important for commercial activities, navigation. North Atlantic is very important for commercial. So first is second largest, second is commercial importance. Why? Developed continents, lot of trade happening, and I want to tell you, ocean ships account for more than 80% of the world's trade. More than 80% of the world's trade that is happening. Is everyone okay with this? So that is there. Acha, what is the shape of this ocean? Generally kaha jata hai, this is S shape. So how is it S shaped? This shape, can you see? This is S. So few things for prelims: second largest, commercial, S shaped. Are we okay with that? Perfect. Next, what comes here is, and when I'm doing world geography, I'll make more of you do this. Next, what comes is that if you remember Harry Hess had given us what concept? Sea floor spreading. Sea floor is spreading out. Yes. For which ocean was he studying? He was studying Atlantic Ocean. So if the sea floor is spreading, that means these continents are going away from each other. Can I say this is an expanding ocean? Expanding. So with time, what will happen? In fact, this ocean was created around 200 million years ago. उससे पहले था ही नहीं ये ocean. This ocean was not there. They were all together. Remember Wegener? And it started breaking. When did it break? Around 200 million years ago. It started breaking, and when it broke, this is expanding. Is everyone okay? Is everyone okay? Now, there are some marginal water bodies. One is this Labrador Sea. What is this? This is Gulf of Mexico. This is Caribbean Sea. जल्दी से एटलस खोलेंगे, वर्ल्ड मैप. कैन यू सी ग्रीनलैंड सी? इधर क्या आएगा? नॉर्थ सी. इधर क्या आएगा? बाल्टिक सी. दिस इज व्हाट? मेडिटेरेनियन सी. यस, दिस इज व्हाट? मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको. व्हाट इज दिस? कैरेबियन सी. व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम एज मार्जिनल सी. इन सीज को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल सी. So sometimes in prelims, they have asked us to match these seas also. So this is Labrador. This is Greenland Sea, East Greenland Sea. Here we have NS North Sea, BS Baltic Sea, और यहाँ पर Norwegian Sea. देख पा रहे? Do we have the atlas? Friends, spend some time. I am waiting for you. I'm not in a hurry. It is important because later on most of you have not seen the oceans. इसीलिए तो है. हाँ बिल्कुल. So Anjali is telling us Scotia and Weddell Sea. Anjali, thank you for telling beta. The only request is that from the exam point of view, we have to look at major ones. So Weddell Sea is there, Scotia Sea is there. They are smaller ones. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. The ones which I have given you, they are important from the exam point of view. And thank you for telling me others also. On a world map, world physical map, you will find Greenland Sea, Labrador Sea, Mexico Sea, Caribbean Sea, Mediterranean Sea, North Sea, Baltic Sea, Norwegian Sea. Get that? So anyone who has found more, perfectly okay. You are absolutely correct. Thank you, and you did a good job. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा नहीं. योगेंद्र शास्त्री जी तभी से इसी पे पड़े हुए हैं. योगेंद्र शास्त्री जी ये सवाल अपने पास रख लीजिए, ठीक है.
वैसे योगेंद्र शास्त्री जी ने और कोई जवाब दिया नहीं दिया, बट इसमें फंसे हुए। फाउंड इट। किसी ने यहां पर एक और सी का नाम लिया, सरगासो सी। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी चलेगा। सरगासो सी वॉज आस्क्ड इन ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो मेनी ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स विल बी देयर इन द क्लास, सो दे विल हैव दिस स्ट्रांग, अबे सरगासो भी तो था, आज बता डालूं तो हो जाएगा। पैफिन बे अभी कोई जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए कोई कह रहा है ब्लैक सी, ब्लैक सी यहां पर आने वाला है, उसको जबरदस्ती पकड़ा जाए, नहीं पकड़ेंगे। आई विल गेट अ चांस टू टॉक अबाउट इन द वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑल्सो, नो। टू ये यश यादव, आप शायद क्लास में पहली बार आए हैं, इन सब पे बात हो चुकी है, सो अपने पहली बार आने का परिचय ना दें, एंड क्लास विल बी डिस्ट्रैक्टेड। तो यश यादव, आई एम सॉरी, आपके क्वेश्चन को मैं अभी नहीं ले रहा हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल है, ये सरगासो सी जो मैंने आपसे कहा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में आया, स्टेट पीसीएस में है, तो अक्सर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ाते हैं, अभी जरूरत नहीं। इज एवरीवन ओके? अभी जरूरत नहीं, वी आर डूइंग जनरल ज्योग्राफी, व्हेन आई डू वर्ल्ड ज्योग्राफी विल टॉक अबाउट दिस। इज एवरीवन ओके? अब ये आपने बेसिक लिखा, आर यू अ लिटिल कंफर्टेबल विद इट? नाउ लेट मी ब्रिंग यू समथिंग मोर। It is roughly half the size of Pacific Ocean. It resembles S. It has continental shelf. The Atlantic Ocean has numerous marginal seas. Did we see some of them? The striking feature is a presence of a mid-Atlantic ridge. इसके center में there is a mountain range that is called mid-Atlantic ridge. What is a ridge? Give me 10 minutes. I will come back to this. Okay? I will come back to this. Is everyone okay? Next. I am drawing, you don't worry, you just write here Indian Ocean. अब Indian Ocean में आ जाए। Why is it called Indian Ocean? India है यहाँ पर। For very long, this whole Indian Ocean was controlled by colonies of Britain. In fact, Indian Ocean for very long was called a British lake. British lake. So the biggest colony for Britishers at this place was India. So they have been calling it Indian Ocean. So that continued. Okay, that continued. So let me draw it. You don't have to worry about it. And let us try and understand certain things. You can see that Atlantic Ocean goes and connects to Arctic. And remember, south of 60 degrees south, 60 degrees south के नीचे कौन सा water है? What is the water south of 60 degree? Southern Ocean. Yes? Can I say Atlantic Ocean is connected to the Northern Ocean also, Southern Ocean also? That is not the case of Indian Ocean. Can you see Indian Ocean is not connected to which one? Quickly tell me. Indian Ocean is not connected to which one? It is not connected, so it is blocked in the north. Blocked in north. Sir, why is it blocked in north? भैया ऐसा ही है प्लेट टेक्टोनिक्स में। क्वेश्चन बनाने वाले बैठे बैठे ये भी सोचेंगे कि सर क्यों ऐसा है? अरे भाई प्लेट है ना, यूरेशियन प्लेट है, ऊपर से ब्लॉक हो गई। पॉसिबल? ये सुनो, अगर बारिश हो रही है और आपके पास छाता है और आपके ऊपर पानी नहीं आ रहा है, you have an umbrella and water is not, why is the water not falling? Because you have an umbrella. Why do I have an umbrella? Because you were smart enough to carry an umbrella. तो यहां पर प्लेट है भाई, लैंड है इधर, लैंड इज ब्लॉकिंग द वाटर्स एक्सपेंशन। दैट इज एवरीवन ओके? और यहां पर क्या है? 60 डिग्री साउथ। तो कैन आई से दिस ओशन इज कनेक्टेड टू द सदर्न ओशन? Southern Ocean, but not in the north. And in fact, I want to tell you too much of land. Africa, West Asia, this is South Asia, this is Southeast Asia, too much of land coming in. तो उससे क्या हो जाता है? This area becomes very hot also. So comparatively warmer ocean. Do you see the logic? Right brain. Why is Indian Ocean comparatively warmer in the north? Because it is surrounded by land and land gets heated up more. Yes or no? Land gets heated up more. Whereas in Atlantic Ocean you will find ये वाला सारा खुला हुआ है, इधर तो है land definitely, but not this side. So that is a simple association that you can make. Is everyone okay?
तो दिस इज सदर्न. अच्छा, एक और आता है सर, मैंने पूछा है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ. अरे देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ. एनीथिंग नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज नॉर्थ, साउथ सदर्न, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन. अच्छा, इसमें कुछ मार्जिनल सीज हैं. व्हाट आर द मार्जिनल सीज, कैन यू टेल मी? 1, 2, 3, 4, 5. तो ठीक है. And in world geography we will understand them also. We will also understand the straits. So one is very good, Red Sea. What is this? PG, Persian Gulf. What is this? Arabian Sea, Bay of Bengal. तो ये कौन सा सागर है हमारे अंडमान के साथ? अंडमान सागर, अंडमान सी. ठीक है. मोस्टली नॉर्थ में वी हैव मार्जिनल सी, साउथ में ज्यादा है नहीं. देयर इज एन आइलैंड कॉल्ड मेडागास्कर विच इज द 4th लार्जेस्ट आइलैंड in the world. And what do we have here? Mozambique channel, Mozambique, ऐसा ही कुछ है. Is everyone okay? वर्ल्ड मैप पे दिखेगा, जल्दी से वर्ल्ड मैप खोलेंगे. आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू. दिस इज द 3rd लार्जेस्ट ओशन, 3rd लार्जेस्ट ओशन, ब्लॉक्ड इन नॉर्थ, ब्लॉक्ड इन, yes, blocked in north. That's what we are talking about. It has got Africa, South Asia. Is it the developed continent? Developed continent नहीं है, but it has something very amazing. Oil का भंडार, ऑयल बहुत है यहाँ पर. वेस्ट एशिया में ऑयल के लिए शिप्स बहुत आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इट इज अ स्ट्रेटेजिक ओशन, strategic ocean. Is everyone okay? And India is at the head of it. India is at the head of it. Everyone okay? More will come in world geography. More will come in world geography. But the idea is, I am spending 2-3 minutes in each ocean. Why? So that you are a little friendly with the oceans. You have not seen the ocean. Ye Indian Ocean. You can see India. This is what we have said. Red Sea, Arabian Sea, Persian Gulf, Bay of Bengal. This is what we are talking about. There are many islands also. I'll be talking about them. But first, let's be connected to them. Is everyone okay? Indian Ocean is smaller than the Atlantic Ocean. It can be considered only half of it. The average depth is this. Important trenches and deeps are there. We'll talk about them also. Sir, can't we say that South China Sea is connected to Indian Ocean also? बेटा देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए. When there is only one world ocean, is everything connected or not? When Mr. Magellan was able to travel the whole world, isn't everything connected or not? Yes or no? So why can't I say that even Atlantic Ocean is connected to Indian Ocean? मैं क्यों चाइना के उसमें फंसा हुआ हूँ आज तक? एक बात बताओ बच्चों, ये इंडियन ओशन है, यहाँ से अटलांटिक ओशन आएगा कि नहीं? अटलांटिक ओशन इज कनेक्टेड. और इधर से गए तो पैसिफिक आएगा कि नहीं आएगा? ये इंडियन ओशन है. अब यहाँ पर है साउथ चाइना सी. ये साउथ चाइना सी को हमने पैसिफिक साइड में मान लिया. यस और नो? सर व्हाई डिड वी कंसीडर इट इन पैसिफिक? आप थे नहीं तो आप बदलवा देते. उस मीटिंग में अगर आप होते तो हो जाता. इज एवरीवन ओके? पहला ये, सर इज इट कनेक्टेड टू साउथ चाइना सी? इट इज कनेक्टेड टू साउथ चाइना सी. इट इज कनेक्टेड टू गल्फ ऑफ थाईलैंड ऑल्सो. इट इज कनेक्टेड टू ऑल द सीज. सब तो कनेक्टेड है बच्चे. थोड़ा सा इसीलिए कह रहा हूं, इमेजिनेशन के लिए कह रहा हूं कि एटलस खोलो. एंड देयर इज समवन हु इज नॉट लुकिंग एट द एटलस. वो सिर्फ सवाल बना रहा है, वो बैठकर सवाल बना रहा है. सवाल विच मे नॉट बी वैलिड ऑल्सो. यस, ये देखो कौशिक राज पहुंचे 60% ऑयल इन महाराष्ट्र. खुशी के आंसू दौड़ गए भाई. 60% ऑयल इन महाराष्ट्र. यस, कल से बाहर से तेल बंद भी महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. ठीक है कौशिक राज, और न रुलाओ, सब लोग पढ़ रहे हैं भाई. अचानक कोई वो निकला ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी इज इक्वल टू यू विल हैव 2 चिल्ड्रन, है ना? तो कौशिक राज अचानक कोई ऐसे पत्थर मत दे मारो बीच में कि वो हो गया. एवरीवन ओके? इज द ऑडियो फाइन? इज द ऑडियो फाइन एवरीवन? इज द ऑडियो फाइन? सिंह सर वॉइस जा रहा है. ठीक है, तीसरे ओशन पर आ जाए जो लार्जेस्ट है. लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन. एंड माई इंटेंशन इज दैट यू स्पेंड सम टाइम विद इट. You spend some time with it.
North America, South America, Philippines, Japan, Philippines. That's it. Is everyone okay? इस ओशन को कहा जाता है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्ट्रेट. व्हाट इज दिस? बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट इज द गैप बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया. एशिया का कौन सा पार्ट है? रशिया है. इज एवरीवन ओके? हैव यू ओपन योर मैप? इज एवरीवन ओके? ये पैसिफिक ओशन है. somebody is saying Pacific Ocean is divided into two parts. Very good, thank you. अरे जितने मर्जी पार्ट कर लो यार. नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक. कहां से पढ़ते हुए टू पार्ट्स मुझे समझ में नहीं आता, बट आपके दिल में बैठा हुआ है तो मैं क्या ही बताऊं. ये सुनो सर, व्हाट इज सेशेल्स? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. पत्थर मारना बंद करो सौरभ सेन. बीच में कोई भी चीज बोलेगा सर व्हाट इज श्रीलंका, आई डोंट अंडरस्टैंड. सेशेल्स एक आइलैंड का नाम है और ये बीच में क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, अपना पोपट बनाने के लिए बोला सर व्हाट इज सेशेल्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज श्रीलंका, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. व्हाट डू यू हैव टू अंडरस्टैंड यार? फोकस. ये वो हैं जो एटलस नहीं देख रहे. एटलस नहीं देख रहे. ओशंस, गेट दैट? यहां पर बेरिंग सी और नीचे से वाइड. व्हाट काइंड ऑफ अ शेप इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ अ शेप इज दिस? Triangular shape, deepest ocean, largest ocean, named by Magellan, has many islands, more than 20,000 islands हैं. 20,000 islands हैं. कैसे island हैं? Some are volcanoes, volcanic, some are made up of coral reefs. कुछ वोल्केनिक है, कुछ कोरल है. और अगर मैं चाइना के साथ खेलने लगूं तो चाइना क्या कर रहा है? मैन मेड. चाइना इज डूइंग मैन मेड. इज एवरीवन ओके? परफेक्ट. So people who can't draw it, you are writing certain things. I'm just playing with, like our association with this. ठीक है. एक ने दिखाया बरमूडा ट्रायंगल. बेटा पोपट हो जाता है, क्यों बीच बीच में लिखते हो? है ना, यहाँ पे है भी नहीं बरमूडा, बट आप लिखना चाहते हो तो मैं कई बार लगता है कि दिखा दिया जाए ताकि आपको पता रहे कौन यहाँ मोहब्बती लोग आए. तो दिस इज चाइना एवरीवन. वेरी डिफिकल्ट थिंग. द वाटर ईस्ट ऑफ चाइना इज कॉल्ड ईस्ट चाइना सी. वाटर साउथ ऑफ चाइना इज कॉल्ड साउथ चाइना सी. इसमें क्या डिफिकल्ट है? इज इंडियन ओशन कनेक्टेड टू इट? ओ यस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. इधर से गए तो इस रास्ते से आ सकते हैं. You can come. When I am doing world geography, I'll tell you what is Malacca Strait. Malacca Strait से आ सकते हैं. Very much. I am तो saying they are connected to the Arctic Sea also. 60 के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ. 60 के नीचे क्या है? Southern Ocean. Is this ocean connected to both north and south? Yes, they are connected to both north and south. Is everyone okay with this? इतना ही करना है मुझे. जापान के पास क्या है? सी ऑफ जापान हो जाएगा. सी ऑफ जापान. ऊपर क्या है? यहां पर क्या है? ओखोट्स्क. नाउ द प्रॉब्लम इज सम ऑफ यू विल बी suddenly worried and you want to memorize them. Don't. World geography I will be doing them. I just want you to have a look at the map and that's it. तो यहां पर क्या हो जाएगा? कोरल. हैव यू हर्ड ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ? ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी कोरल रीफ है, इसको कोरल सी बोलते हैं. The Dutch navigator who first came to this area, explored this area, is called Tasman. तो उनके नाम पे तस्मान सी भी है. How many of you could find this? East China Sea, South China Sea, Okhotsk Sea, Coral Sea, Tasman Sea. इधर लिखा होगा बेरिंग सी. मिल गया ये? Yes or no? I am waiting. I'll give you 1 minute for that. इतना ही चाहिए. This is what is the fear of the ocean should go. Okay sir, they are very much there in my atlas also. On the world map I can see some of those names. Yellow Sea is also there. ठीक है बच्चों. As I said, there will be more than these. There will be more than these. All of you, some of you have been doing world geography before also, so you would know some names, but my whole idea is first we don't get this. So why not ocean water don't go inside earth interior with help of trench?
नीले आपको बहुत पता नहीं है ट्रेंच होती क्या है, तो बता देंगे। ट्रेंच से सर पानी अंदर काहे नहीं चला जाता, पानी बेचारा बाहर आ रहा है। एंड नीले यू हैव बीन अटेंडिंग द क्लासेस, यू हैव बीन अटेंडिंग द क्लासेस, वाटर बीइंग लाइटर इज कमिंग आउट ऑफ डीगैसिंग, तुम उसे पानी डाल दो। तुम बैठे बैठे तुम्हारे घर में जो सीलन आ रही है उसको सोच रहे हो। यहां तक समझ में आया सबको? इज एवरीवन ओके विद दिस? एवरीवन ओके? चलिए, ओशंस के बारे में कुछ कुछ बता दिया, यहां पर लिखा हुआ। दिस ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट टुगेदर विद एसोसिएटेड सीज, दैट इज देयर आर 20,000 आइलैंड्स सेंट्रल पैसिफिक एंड देयर आर मेनी ट्रेंचेस। I am just giving this as a handout because I am going to spend a lot of time in these oceans. So first thing I must do is know these oceans. ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पर कोरल सी है, साउथ चाइना बेसिन है, बेरिंग सी है, एल्बेट्रॉस प्लेटू, all these things will come in due course of time. Yes or no? Sujata is saying not able to see this on the atlas, but Sujata, there are so many people who are able to see it on the atlas. So can I say that we will have to learn to look at the atlas? World map में देखिए तो सही। Yes or no? Somebody is saying C का नाम जरूरी है, तो you have not looked at the previous year's questions. Yes, there is some parts, some of the names should be known, and leave it to me. जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा we will be doing that also. Is everyone okay? आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ओशन। अब मैं ओशंस के ओशनोग्राफी पर आ रहा हूं। इज एवरीवन ओके? सर व्हाई इट इज स्पेसिफाइड? ये खाली बैठे कहानी सुननी है इनको कि सर उसको पैसिफिक ओशन क्यों स्पेसिफाइड है। बेटा ये ना इंटरनेट पे कहानी है, इंटरनेट स्टोरी पंचतंत्र टाइप मिल जाएगी। वापस आ जाए, इंपॉर्टेंट थिंग। अब बड़ा क्वेश्चन है, ये तो नौटंकी क्वेश्चन है, ये तो टाइम पास वाले घूम रहे। रियल क्वेश्चन, हु ओन्स द ओशन? ओशन किसके हैं? इज दिस अ वैलिड क्वेश्चन और नॉट? वैलिड और नॉट व्हेन इट कम्स टू कंट्रीज फाइटिंग फॉर टेरिटरी? ट्रू और नॉट? दिस इज अ मोर वैलिड क्वेश्चन। जल्दी से बताओ किसके हैं, किसके हैं? कोई बोला सर आई नो ऑल द ओशंस, इट इज इन माई माइंड, इसीलिए पूछ रहा हूं। अब माइंड से आगे बढ़ना है। वो जो माइंड है ना वो लेफ्ट ब्रेन है। यू हैव मग्ड अप ऑल द नेम्स, नाउ वी आर राइटिंग वन। हु ओन्स द ओशन? सभी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्यों लड़ेंगे? वाई यू वॉन्ट टू ओन? वाई वी वॉन्ट टू ओन देम? वाई वी वॉन्ट टू ओन द ओशन? नंबर वन, टेरिटरी। Every country wants territory. I also want it for my safety so that nobody can attack on me. I also want it for my resources. I also want to see oceans as gateway to international trade. I hope you are writing also gateway to international trade. तो जिसने कहा सर मुझे सारे ओशंस दिमाग में रटे हुए हैं, बेटा ये भी रट ले, ये भी रट ले, काम आ जाएगा अभी। सर मेरे दिमाग में एकदम फोटो खींचा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लेफ्ट ब्रेन, बहुत अच्छा काम किया। डू द सेकंड थिंग, देयर इज अ फाइट, बिकॉज थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आएगा सर व्हाई आर वी डिवाइडिंग द ओशन? बेटा इसलिए डिवाइडिंग द ओशन। हु ओन्स द ओशन? हु ओन्स द ओशन? नाउ एवरीवन, आई हैव अ क्वेश्चन, हु ओन्स द एटमॉस्फेयर? हु ओन्स द एटमॉस्फेयर और एयर? Does anyone own the atmosphere or air or oxygen? Does anyone own atmosphere, air or oxygen? Yes or no? Yes or no? Yes or no? No one. Okay. Should there be anyone owning it? Should there be? Is it desirable that someone has rights on atmosphere? Is it desirable? Would you want it? Is it moral? Is it not violation of human rights? So no one should have rights on the air and oxygen. Remember, a time is going to come in the world. A time is going to come in the world. This will become a reality.
In COVID, when we had oxygen shortage, there were some people who were owning the air also. आएगा, ये भी टाइम आएगा, बट उससे पहले this time has already come. Many people believe just like air, ocean belongs to you and I. Why should anyone say that ocean is my territory? Ocean तो सबके हैं यार. Ocean किसके पिताजी का है? Who brought oceans on this planet? It is ours. Yes or no? But then countries are fighting on it. Countries were fighting since the age of colonization. जब से colonization हुआ, remember colonization? Who were the countries who were doing it? European countries like France, Britain, Holland, जिसको डच कहते हैं आप लोग, Dutch, yes. Even Germans were interested in that. Spanish, Portugal, they were doing that, and they colonized the world. And now world इनकी मुट्ठी में है. What is not with them? एक अंटार्कटिका बचा है. Antarctica is left, and second thing is oceans are left. After colonizing the world, North America, South America, Asia, Africa, Australia, ये सब कहाँ देख रहे थे? अब अंटार्कटिका में जाएंगे. And oceans also. And they were fighting. Get that? In oceans, they were having a fight. Who owns the ocean? So there was no way to prove it. They kept on fighting. फिर बना एक 3-mile law. 3-mile law, इसको बोलते हैं कैनन शॉट लॉ. That if this is your land, 3 miles तक, 3 miles from your land, this ocean belongs to you. ये रूल बना कब? Colonizers, they brought this. Why 3 miles, sir? What was so special about 3 mile? Cannon क्या होती है? तोप होती है, तोप का गोला. Cannon होता है. So they were able to develop a cannon which could fire up to 3 mile. तो अगर कोई दुश्मन आया इसके अंदर, if somebody enters my ocean territory, I will fire. So stay away. कितना दूर रखेंगे? 3 miles. Is everyone okay? तो ये चला जा रहा था, and countries were fighting. So now what happened in 1970s? They all approached UN and they said, यार एक बात बताओ, बहुत लड़ाई हो रही है. Can you make a rule, international law for the territory of oceans? समझ में आया everyone? Otherwise you will ask me a question, sir, why did we divide the ocean? So there was a fight, not today, not tomorrow. This was a fight since the colonial times. And was India a part of this? No, India was not. India was a colony. But these Europeans were doing it. But after India got independent, 1970s, countries went to UN. 3 mile means 3 kilometer. बेटा माइल अलग होता है, किलोमीटर अलग होता है, दोनों नपाई की यूनिट है. अब आप कहो 3 feet इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, ऐसी नशीली बातें मत करो, है ना. कुछ लोग अभी चाहेंगे सर माइल बताइए कितना होता है. अभी इसी में टेंशन में. तो पहले जहां पर ध्यान है उस पर ध्यान दीजिए. एवरीवन, वी आर हियर, कंट्रीज आर फाइटिंग. अब वैलिड है, यूएन को बुलाया जाए. यूएन हैज कम एंड यूएन सेज, वेल एक चीज क्लियर है. यूएन सेज ओशंस बिलोंग टू ह्यूमैनिटी. यूएन ने क्या कहा? ओशन बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए. इज एवरीवन ओके? ओशंस बिलोंग टू ह्यूमैनिटी. But they said we need some territory. एक बात बताइए everyone, this is India. Are you okay with the Pakistani ship or a Chinese submarine standing next to it? Are you okay with it?
Are you okay with a Pakistani ship or a Chinese submarine near it? So when UN says that ocean belongs to everyone, will you tell ocean that's okay, but I feel unsafe? So UN said, okay, we will give limited rights. चलेगा? ये किस में मिले? UN made a law and that law is called UNCLOS. Please write down UN. Oceans belong to everyone. Oceans belong to everyone and we will give you right to remove Pakistan and Chinese ship. हटाओ इनको यहाँ से. ये allowed नहीं है. They are not allowed. Is everyone okay? So how is UN going to do that? वो मैं आपको बताने वाला हूँ. I am going to do that. What is UN clause? United Nations Convention on Law of Sea. ओशन पे जो लॉज बनते हैं वो इसके तहत बनते हैं. They decide the territory. They decide the rights. किस कंट्री के पास राइट्स होंगे, किसको लाइसेंस दिया जाएगा. This one decides. They also decides conservation. They also decide pollution control. कौन सा लॉ है? अनक्लॉस. याद रहेगा. आई नो somebody said सर मुझे सारे ओशंस पता है. वेरी गुड बेटा. Add to this. Add to this. यूएन ने कहा कि every country will choose a reference line. तब कोई नापने के लिए for measurement of distances you have to choose a line, reference line, and that line will be called the baseline. इसको क्या कहा गया? बेस लाइन. सबको समझ में आया? सर ये कौन बताएगा बेस लाइन? एवरी कंट्री वॉज गिवन द फ्रीडम दैट योर कोस्ट लाइन इज लाइक दिस. योर कोस्ट लाइन इज आड़ी टेढ़ी कटी फटी अनइवन. नो, so you take an average coastline and you declare it as baseline. Everyone okay? ये क्या हो गया? Baseline. Who will make this? Countries mapping agency, like India has its own mapping agency, hydrographic office, that will do that. ये हो गया country को freedom है. Is everyone okay? All the waters inside this, ये सारे पानी जो इस तरफ आए, all the water which lies on the land, they will be called what? They will be called inland water. All waters will be called inland waters, and inland water is category number 1. So category number 1, inland waters. 100% लिख दिया मैंने. What is 100%? 100% sovereignty. कंट्री के सारे रूल्स यहां पे अप्लाई होंगे. दिस इज एज गुड एज आई रोट इनलैंड. आई एम सॉरी, इसको इंटरनल कर लो. इंटरनल वाटर, इनलैंड और इंटरनल वाटर. कंट्री के पास 100% राइट है. दिस इज एज गुड एज लैंड टेरिटरी. नोबडी कैन एंटर इट. टेल मी मुंबई टेरर अटैक्स, Pakistani boats entered India's sovereign territory. That was a big thing. Please understand. Boats आ गई, इसमें घुस गई. गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबट अलाउड नहीं है. This is my own baseline. Is everyone okay? 100% sovereignty, authority नहीं, sovereignty. आप यहाँ के sovereign है, आपका वर्चस्व है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में you would have read that president India is a sovereign country as per the preamble and president is the head of it. 100% मेरा. उसके बाद they said another line is 12 nautical mile. Inland water क्या हो गया? Inland water landward of baseline.
बेस लाइन के अंदर जो है वो इनलैंड वाटर कहलाएगा. एवरीवन विद मी ऑन दिस? नाउ दे अलाउड अस 12 नॉटिकल माइल. 12 नॉटिकल माइल. अब ये क्या है, एक नई यूनिट आई है. नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर. Distances in oceans are measured in the unit of nautical mile. Distance in ocean. समुद्र में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो एनएम में होता है. नॉटिकल माइल इट इज 1.85 किलोमीटर. इसको क्या कहा गया? दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर. टेरिटोरियल, ये क्या है आपका? नंबर 2 है. 12 nautical mile seaward of 12 nautical mile seaward of what? Baseline. Again 100% sovereign. ये भी दे दिया. 12 nautical mile. Is everyone okay? Territorial water. 100% sovereign. अगर कोई मर्डर होता है, if a murder happens in this, if a murder happens in this zone, India's law will apply. 100% will apply. Do you get that? Now imagine someone committed a murder. Someone committed a murder here. Who will catch him? India's law. Who will be there to catch? Coast Guard of India. Coast Guard यहां पर रहता है. Coast Guard जाकर उसको पकड़ लेगा and bring it to Indian court and that person will be tried. Now what happened is Coast Guard is trying to catch him, but that fellow crosses 12 nautical mile and comes here. इधर आ गया. That fellow committed a crime and came on this side, crossed 12 nautical mile. Now he's outside the territorial water. He reaches there and starts saying tilly to the Coast Guard. Coast Guard को tilly कर रहा है क्योंकि मैं तो बाहर आ गया. Can we do something about it? सुनो, इसे पकड़ो. You can catch. एक और लाइन दे रहे हैं आपको. 12 nautical mile और दे दिया. ये जो टिल्ली कर रहा है इसको पकड़ के कान के नीचे देना है. नंबर 3, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिगुअस. कॉन्टिगुअस जोन. और पीछा करो. पीछा करो को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हॉट परसूट जोन. अगर कोई भाग रहा है क्राइम करके, टिल्ली लिल्ली कर रहा है, पहले उसका टिल्ली लिल्ली अंगूठा पकड़ लेना, फिर जहां देना हो देना. ये सुनो, दिस इज लिमिटेड सॉवरेनिटी. यहां लिमिट कर दिया. ये आपके क्या वायलेट कर रहा है? कस्टम के लॉ वायलेट कर रहा है. कस्टम्स को वायलेट कर रहा है. सैनिटरी लॉज वायलेट कर रहा है. कुछ पोल्यूशन कर रहा है यहां पर. यस, कस्टम में रिमेंबर आफ्टर डिमोनेटाइजेशन यू कैन नॉट हैव दोस 500 रुपी नोट एंड 1000 रुपी नोट. अगर वो यहां पे है, स्मगलिंग कर रहा है, यू कैन कैच देम. बट इंडिया के सारे लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, ये वाले लॉ अप्लाई करेंगे. इज एवरीवन ओके? एवरीवन ओके? 2 जोन दे दिए. अब कंट्रीज को बोला आर यू हैप्पी? दे सेड ओके, 1 मोर जोन वी आर गिविंग फ्रॉम बेस लाइन कम 200 nautical mile. This whole area is your EEZ, exclusive economic. If you want to exploit petroleum from here, if you want to exploit petroleum from here, if you want to exploit metals from here, you, the country, has the right to do that. No other country can come here without your permission. But only for economic things, not other things, not other rights, only economic rights. If you want to conserve here, if you want to make a special area, protection area, conservation area, you can do that. That all is allowed. But mostly for economic reasons. Is everyone okay? Economic. पूरा कहां पर है? 100% कहां पे? Internal water and your 12 nautical mile. पीछा करो कहां पर है? Next 12 nautical mile. Is everyone okay? Now comes the question. UN, what is this? You have given right to the country. You have given right to the country, but you said oceans are for humanity. Oceans तो दुनिया के हैं. What happened to that idea? UN said, don't worry. इसके आगे है, all this is called high sea. And high seas belong to humanity. इस पर किसी देश का अधिकार नहीं है.
Anyone can use them. Ships are going, you cannot stop them. जो भी होगा पूरी आजादी, right to navigation. तो प्लीज रिमेंबर, इफ यू फील मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप ही का है. ओशंस में एक प्लॉट आपके नाम का है. यस और नो? नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये तो यूएन ने कर दिया, बट वी विल हैव श्रीलंका. श्रीलंका को भी यही मिलेगा. श्रीलंका विल ऑल्सो गेट दिस. श्रीलंका विल ऑल्सो क्लेम, वी विल ऑल्सो क्लेम. विल देयर बी डिस्प्यूट? So UN said, okay, if there are dispute, we have a dispute tribunal. You can approach us. अगर कोई प्रॉब्लम है, we will decide and you can agree together. आप मान लीजिए, आपस में बांट लेंगे. तो India and Sri Lanka, they have agreed on certain things. Okay, this is your line, this is my line. But here, can a country make fun of UN? I don't agree. Which country am I talking of? I'm talking about China. China says entire South China Sea belongs to us. China का क्या कहना है कि entire South China Sea ये हमारा है, ये सब हमारा है. Now Philippines says भाई हमारा भी तो जोन होगा. Yes, Philippines says that. Vietnam says we should also have a zone. Indonesia, Malaysia should also have a zone. China says no, this is ours. So UN says, hello, भाई देखो चाइना, this is your territorial water, this is your contiguous water, this is your EEZ, ले लो इतना. China said नहीं, हमारा पूरा है. When you ask China why, they said historically our ancestors, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज यहां पर घूमा करते थे. चाइना को कोई समझाया भाई, कोई लॉजिक होता है इंटरनेशनल लॉ? ये क्या बोल रहा है, पूर्वज थे यहां पर, हमारी 9 लाइन थी, वी यूज्ड टू यूज दिस एंड ऑल दैट, वी आर नॉट लिसनिंग टू एनीवन, हमारे एंसेस्टर्स थे. अब चाइना को कौन बताए? तुम्हारे एंसेस्टर्स के जो एंसेस्टर्स थे ना, उनके ऊपर एक चचा हुआ करते थे, चिंगेज खान, मंगोल्स. ये चचा अक्सर आया करते थे आपके एंसेस्टर्स को नहलाने धुलाने के लिए. डर के मारे आप लोगों ने वॉल ऑफ चाइना बनाई. यू मेड अ वॉल ऑफ चाइना. So today, on this stupid argument that our ancestors were here, Mongolia can claim entire China. Yes or no? फिर चाउमीन का क्या होगा? बोला एंसेस्टर्स घूम रहे थे. अबे एंसेस्टर्स मंगोल, चिंगेज खान, कुबलाई खान कहां नहीं घूम के गए यार. Yes or no? फंडा दे रहा है. बट you know today China is an economic might. भूले कौन? This is how tensions build in the world. Remember during Second World War, Germany जाति कर रहा था. Germany under Hitler was making some nonsense statements. People kept quiet. अभी क्या हो रहा है? सारी चीजें. And Germany realized I will need alliances. So अभी China अपने alliances ढूंढ रहा है. China economically लोन दे देकर साहूकारी भी कर रहा है. All those things are there. Who will fight with China? सब तो लोन लेके बैठा है ना? सब साहूकार का लोन लेके बैठा है. अब साहूकार को कौन करे? बट एज पर अनक्लॉस चाइना को इतना ही मिलेगा, बाकी शिप्स आ जा सकते हैं. चाइना इज नॉट स्टॉपिंग एनी शिप फ्रॉम मूविंग इन द हाई सी. दे आर नॉट स्टॉपिंग इट, बट दे आर क्लेमिंग इट. क्लेम तो आपको पता है, चाइना अरुणाचल भी क्लेम करता है. क्लेम किस लिए करता है? उसको चाहिए कि वो नहीं चाहता कि इंडिया एंड चाइना कैन लिव को एग्जिस्ट इन अ हेल्दी मैनर. वो इरिटेंट्स को रखना चाहता है सो दैट इंडिया इसी में उलझा रहे और इंडिया अपना विकास ना करे. इंडिया इज गॉट स्टक इन दिस, गेट्स दैट, बट इंडिया इज नो लॉन्गर एन इंडिया विच इज स्टक इन दोस टाइनी थिंग्स. वी हैव अ वर्ल्ड विजन. If China doesn't accept it, we are carrying it. We are able to not only safeguard our own sovereignty, but China के लिए इकोनॉमिक जवाब भी तैयार करना है, स्ट्रेटेजिक जवाब भी तैयार करना है. एंड दैट कैन नॉट हैपन बाय बैनिंग टिकटॉक. कितने लोगों को अचानक लगा भाई टिकटॉक बैन कर दिया, चाइना को तो घुटनों पे ला दिया, ऑल दोस टिकटॉक पकौड़ास छोड़ दो. क्या करना होगा आपको, मुझको, द यंग जनरेशन has to become so strong, so solid economically, technologically, socio-culturally also, not dividing each other, but being united as an Indian, and then we take it over there. और बाकी तो आपकी क्लास चल ही रही है.
वो मैंने बनाया था मैप में. एवरीवन, इट वाज इन द मैप. दिस वाज शोन ऑन अ मैप. मैप में अच्छे से समझ आता है. मैप में यू कैन सी देम, बट इन द बुक्स दिस इज फ्रॉम यूएन. ये डेप्थ में बनाते हैं ओशन. तो पहले क्या डिसाइड किया? कंट्री विल डिसाइड इट्स बेसलाइन. फ्रॉम बेसलाइन 12 नॉटिकल माइल इज टेरिटोरियल, प्लस 12 from this line makes it 24 contiguous zone, and from baseline to 200 nautical mile is what? Exclusive zone. And this is high seas. High seas. High seas किसके? ह्यूमैनिटी के. यहां पे लिख के दे दिया क्या क्या हो सकता है. EEZ में इकोनॉमिक है, सॉवरेन राइट्स हैं, एक्सप्लॉयटेशन, establishment for artificial islands can be done, and all those things can be done in the EEZ. समझ में आ गया? Everyone okay? ये आपके हैंड आउट के लिए. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट आई हैव अ होमवर्क फॉर यू. नाउ वी हैव रेड अ लॉट अबाउट लैंड. वी आर गोइंग डीप इनसाइड द ओशन. इन द ओशन देयर आर बेसिन, बिग बेसिन. जैसे वॉश बेसिन होता है, यू हैव अ वॉश बेसिन इन योर बाथरूम. पानी डालते तो सारा नीचे चला जाता है. दिस इज अ बेसिन. बट ऑन द बेसिन देयर आर मेनी हिल्स, mountains. Yes, there is some part of the continent which is submerged, is called continental shelf, continental slope. Then trenches. Somebody said, sir, ये trench से पानी अर्थ के अंदर क्यों नहीं चला जाता? बेटा ये सिर्फ लिथोस्फीयर है. ये trench is not going to the core. This is just going. Mariana Trench is the deepest trench ना बच्चे. कितना डेप्थ है उसका? 11 किलोमीटर्स. 11 किलोमीटर्स ही तो है. Remember, lithosphere itself is 100 kilometers. After that, mantle will start. तो डोंट थिंक ये पाइप लगा हुआ है और मजे से पानी नीचे तक जा रहा है, कोर में जाएगा. नहीं जाएगा बच्चे. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हीट आल्सो दैट विल आल्सो कम अप. तो लॉजिक लगाना है. आई हैव अ रिक्वेस्ट. यू हैव क्लास 11th एनसीईआरटी. वी आर डूइंग क्लास 11th एनसीईआरटी. पीपल हु हैव बीन डूइंग जनरल ज्योग्राफी विद मी, क्या आप उससे ओशन और ओशन के अंदर क्या है ये वाला पार्ट पढ़ के आएंगे. जनरल प्रोफाइल, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंटल स्लोप, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंटल राइज. टुमारो आई विल एक्सप्लेन दिस डायग्राम. I'll also tell you what is a trench. I will tell you what is a continental shelf, and then it goes continental slope. What are ocean basins and what do they have on them? What are these abyssal hill, guyots, islands? ये सारे अब हम क्या करेंगे? Now I am going to take you inside the ocean. Why did I not take you inside the ocean right in the beginning? Because many of you don't even know oceans. थोड़ा सा मेरा मन था that we should look at the atlas, look at the oceans. Are you comfortable with the names of the oceans, the seas? ऊपर का समझ में आ गया? थोड़ा सा किसी ने सवाल पूछा, सर नमक क्यों है? बता दिया नमक है. सर मैंने पी लिया, मैं फिर भी जिंदा हूं. पीता हूं फिर भी जीता हूं. एकदम देवदास टाइप लाइफ चल रही यार. थोड़ा ज्यादा पैग बढ़ा दो. ठीक है, अभी ढक्कन से पी रहे हो, फिर अद्धा कर लो. पहले पौवा करना, फिर अद्धा, फिर खंबा कर लेना, फिर 4 खंबे एक साथ ले लेना, फिर उसके बाद सब बाहर आ जाएगा. अंतड़ी वंतड़ी ज्यादा नहीं पीना. सी वाटर. इज एवरीवन ओके? कोई बोला मैंने सर एनसीईआरटी कर लिया. थैंक यू पीपल हु कंप्लीटेड एनसीईआरटी. आई एम श्योर आफ्टर डूइंग द क्लासेस यू विल फाइंड एनसीईआरटी इज इजी नाउ. काफी इजी हो गई होगी, कंफर्ट भी बढ़ रहा होगा आपका. तो ये सारी चीजें आपको हैंड आउट में भी दी जाएंगी. वर्ल्ड में रिजेस कहां पर है? नाउ यू नो सी फ्लोर स्प्रेडिंग. अब ओशन में सेंटर में रिजेस हैं, वो कहां पर है? वो तो यहां फोटो में भी दिख रही है. ये पर ओशन रिजेस हैं. एनसीईआरटी इज गिविंग. मैंने आपको वर्ल्ड का भी दे दिया. These are more important, the details. Some of you will be worried, sir, I have to remember all this. No. If you are a geography optional student, we will talk about them in so much detail, ये automatically remember हो जाएगा. But if you are a GS student, can you identify ये क्या हो रहा है? Which process is this? This diagram is for what? ये हमने एक बार किया है. Something rising, coming out, islands being created, going on the side. How many of you can recognize this diagram? अगर ये diagram recognize हो गया, GS के लिए उतना ही चाहिए. कौन सा है diagram? जल्दी बताओ. आकाश बोला कब मिलेगा हैंड आउट? बेटा नशे में मत रहो आकाश, रोज शाम को अपलोड हो जाती है स्लाइड. पिछली स्लाइड. सी फ्लोर स्प्रेडिंग. वेरी गुड. सी फ्लोर स्प्रेडिंग. ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है. सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहां हो रहा है? इन जोन्स में हो रहा है. सो दीज जोन्स आर द मिड जोन्स. एंड वेयर इज द सबडक्शन जोन? इन सबडक्शन जोन इट गोज इनसाइड, इट फॉर्म्स ट्रेंचेस. सो दीज आर द सबडक्शन जोन्स. रिमेंबर, Pacific ring of fire, subduction happening on the margin. I'll be explaining all of them, don't worry. General profile will be there, and then after that we will go into ocean dynamism, where we will learn waves, tides and currents. Everyone okay? It's 10:30, time to end the class. I hope first day
with the oceans. You are not afraid of it. That's a good advantage. Thank you for mentioning it. Tomorrow and day after we don't have a class. So I have a request on the weekend. Please do the chapters on atmosphere. If you have doubts, ask on the Ask Doubt section of the website. Chapter on atmosphere, class 11th NCERT. Some people in the chat will write, अरे class तो बता दो कौन सी book पढ़नी है. Class 11th NCERT chapters on atmosphere, which is given in the content page. I have already mentioned it in my classes. वो जो climatic classification chapter है उसे छोड़ देना. No copy needed for GS student. After that, oceans begin. Can we use this weekend for reading 2 chapters of ocean also? What is ocean? Why they are salty? What are the temperatures? I will explain. And what is inside the ocean. Just that specific homework, use your NCERT, and I will take you to the level where exam is needed. And I am filling in some content. Answer writing will come with that. Many people keep on requesting, sir daily एक answer writing दे दो. बेटा PYQ उठा लो, आप उससे कर लो. मैं अभी answer writing नहीं दे रहा हूँ. There is a reason for that. I do bring in PYQs of prelims. I want some content and some thinking to come, and I can see in your answers. Many of you have started thinking. जैसे ही ओशन लिखा है एकदम से दिमाग में फ्लो आता है. एंड फॉर दोज पीपल हु हैव अटेंडेड क्लासेस जिनको चीजें रटी हुई हैं, वेरी गुड बच्चों, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, बट दैट इज ओनली 10%. उस पर खत्म नहीं करना. यू हैव डन अ वेरी गुड थिंग, बट डोंट एंड ऑन इट. दैट इज अ वेरी गुड स्टेप. वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट. डू वी गेट दैट? GC Leong is needed. Ruprekha Yadav, for general geography you don't need GC Leong, but for world geography I will tell you the chapters when it is needed. Is everyone okay? So thanks a lot. I hope your confidence keeps on growing. Use the weekend. Happy Navratri once again, and happy Ramazan to all of you. And I will see you on Monday. Bye bye. Jai Hind.